So today we will study about the choice of solvent in the UV visible spectroscopy. So इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं सूटेबल सॉल्वेंट के. तो इसमें सबसे पहले जो होता है, इट शुड नॉट एब्जॉर्ब द रेडिएशन इन द रीजन अंडर इन्वेस्टिगेशन. सेकंड, ये जो है लेस पोलर होना चाहिए जिससे कि मिनिमम इंट्रैक्शन हो सके सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के बीच में. कॉमनली यूज सॉल्वेंट जो इथेनॉल होता है 95% यूज़ किया जाता है. ये चीप होता है. गुड डिजॉल्विंग पावर हो गया, ये इट डज़ नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन अबाउट 210 नैनोमीटर. ट्रांसपेरेंट होता है. ये कमर्शियल इथेनॉल जो है यूज़ नहीं करते. इसके साथ हमने देख लिया बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होते हैं ये सब नहीं यूज़ करते क्योंकि इनकी जो रेंज होती है एब्जॉर्प्शन की वो 240 to 280 नैनोमीटर होती है. और सम अदर सॉल्वेंट जो ट्रांसपेरेंट होते हैं अबाउट 210 नैनोमीटर आर एन हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, मिथेनॉल, वाटर, ईथर. नेक्स्ट इज द सॉल्वेंट्स के इफेक्ट देखना है. इसमें क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सैम्पल इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर स्पेक्ट्रल एनालिसिस. कॉमनली यूज सॉल्वेंट जो है 95% इथेनॉल होता है. इथेनॉल बेस्ट सॉल्वेंट होता है. फिर कमर्शियल इथेनॉल यूज़ नहीं किया जाता. Then the position as well as intensity of absorption maximum get shifted for a particular chromophore by changing the polarity of the solvent. अगर हम polarity by increasing the polarity of solvent compounds such as dienes and conjugated hydrocarbon do not experience any appreciable shift. increase करेंगे polarity solvent की तो उसमें कुछ compounds है जैसे dienes, conjugated hydrocarbon, उसमें कोई shift experience नहीं होता. फिर absorption maximum for the non-polar compounds usually shifted with the change in the polarity of the solvent. इसमें हम देखेंगे n is to n pi star, that is the n pi antibonding. in this the ground state जो होता है ये जनरली किस केस में है, दे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनेट कंपाउंड्स होते हैं ना वो एक तो दो डिफरेंट शिफ्ट शो करते हैं. तो पहला जो है एन पाई स्टार, इसमें ट्रांजिशन जो होता है वो कम होता है, लेस इंटेंस इसमें हीट इज़ लेस इंटेंस होता है. इन दिस एब्जॉर्प्शन बैंड मूव्स टू द शॉर्टर वेवलेंथ बाय इंक्रीजिंग द सॉल्वेंट पोलैरिटी. एक तो एब्जॉर्प्शन बैंड जो है मूव करेगा शॉर्टर वेवलेंथ को, उसकी वजह से जो है इंक्रीज पोलैरिटी जो है सॉल्वेंट की वो इंक्रीज होती है. इन दिस ट्रांजिशन the ground state is more polar as compared to the excited state. The hydrogen bonding with the solvent molecules occurs to a lesser extent with the carbonyl group in the excited state. नेक्स्ट इसमें एग्जांपल दे रखा है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ऑफ एसीटोन इन हेक्सेन एंड एज कंपेयर टू वाटर. नेक्स्ट इज द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन. ये इंटेंस होता है. इन दिस केस द एब्जॉर्प्शन बैंड मूव्स टू द लॉन्गर वेवलेंथ बाय इंक्रीजिंग द सॉल्वेंट पोलैरिटी. द डाइपोल इंटरेक्शन विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लोअर द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट मोर देन दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट. हेंस द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इन इथेनॉल विल बी ग्रेटर देन दैट ऑब्जर्व्ड इन द हेक्सेन. यहाँ पे जो है इन्होंने this is the absorption shift with the change in the polarity of the solvent. ये बताया है यहाँ पे absorption shift जो है वो चेंज हो रहा है solvent की polarity के अकॉर्डिंग. so in short pi star orbital get more stabilized by the hydrogen bonding with the polar solvents like water and ethanol. It is because of the greater polarity of pi star orbital compared to pi orbital. Thus the small energy will be needed for such a transition and absorption. It shows the redshift. The n2 sigma star transition is also very sensitive to the hydrogen bonding. यहाँ पे लिखा है इसका सेंसिटिव होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहाँ पे ना एन सिग्मा स्टार है. ओके, एन सिग्मा नहीं होता, रॉन्ग लिखा है यहाँ पे, एन सिग्मा स्टार होगा. सो जस्ट करेक्ट दिस वन. नेक्स्ट जो है अल्कोहल और अमाइंस का क्या होता है. अल्कोहल एज वेल एज अमाइंस फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ. such association occurs, it will be due to the presence of the non-bonding electrons on the heteroatom and the transition जो होता है रिक्वायर करता है ज़्यादा एनर्जी. और इसमें when a group like carbonyl is more polar in the ground state as that in the
excited state, then the polarity will increase and it stabilizes the non-bonding electrons in the ground state because इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. सो द एब्जॉर्प्शन शिफ्ट जो है वो एब्जॉर्प्शन इज शिफ्टेड टू द लोअर वेवलेंथ. और जब व्हेन द ग्रुप इज़ मोर पोलर इन द एक्साइटेड स्टेट, पहले में हमने देखा ग्राउंड स्टेट में होता है, दूसरे केस में क्या है, जब कोई भी ग्रुप है वो क्या है, मोर पोलर होगा एक्साइटेड स्टेट में, फिर जो एब्जॉर्प्शन जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाएगी and it will going to increase the solvent polarity and it stabilizes the non-bonding electrons in the excited state. The increase in the polarity of solvent generally shifts the n to, इसमें जो होता है ना, द इंक्रीज इन सॉल्वेंट पोलैरिटी शिफ्ट्स द n pi star and n sigma star बैंड्स टू शॉर्टर वेवलेंथ एंड पाई टू पाई बैंड्स टू लॉन्गर वेवलेंथ. मतलब क्या है, जब भी इंक्रीज इन पोलैरिटी जो है शिफ्ट करेगी n एंटी बॉन्डिंग पाई एंड n एंटी बॉन्डिंग सिग्मा बैंड टू द शॉर्टर वेवलेंथ, और जो पाई टू पाई स्टार होगा वो क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ को जाएगा, शिफ्ट होगा एब्जॉर्प्शन सॉल्वेंट पोलैरिटी इंक्रीज होने पे. सो दिस इज ऑल अबाउट द application are also there. Application of the UV visible spectroscopy, it includes the detection of functional groups. It is generally applied to detect the कौन सा group presence है या absent है. Then the absence of a band at a particular wavelength may be regarded as an evidence for the absence of a particular group in the compound. A little information can be drawn from the UV spectrum if the molecule is very complicated. If the spectrum is transparent above 200, it shows the absence of conjugation, a carbonyl group, benzene, aromatic compounds, bromide atoms. एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन में क्या होता है, द एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन इन पोलिन्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय द एस्टिमेटेड एडिशन इन द अनसैचुरेशन विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन टू द लॉन्गर वेवलेंथ. इट इज़ फाउंड दैट द एब्जॉर्प्शन occurs in visible region at about 420 if n equal to 8 in polyene, and such an alkene appears color to the human eye. Next is the distinguish, ये यूज़ किया जाता है डिस्टिंग्विश करने के लिए कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड के लिए, और इसमें एक एग्जांपल दे रखा है हमने. So the forbidden Ni star band for the carbonyl group in the compound, first वाले में क्या होता है, will appear at a longer wavelength as compared to that of the for the compound. Second, the alkyl substitution in an alkene causes a bathochromic shift. ये जो टेक्निक होती है is not much useful for identification of the individual alkenes. नेक्स्ट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अननोन कंपाउंड. इसमें क्या है, हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ अननोन कंपाउंड टू दैट ऑफ द नोन कंपाउंड. द फॉर्मर कैन बी आइडेंटिफाइड इफ द स्पेक्ट्रा ऑफ इफ द टू स्पेक्ट्रा coincide, the two compounds must be identical. If अगर ऐसा नहीं हो स्पेक्ट्रा, if the two spectra do not coincide, then the expected structure is different from the known compound. Identification of the compound in different solvents, इसमें हम देखेंगे समटाइम्स कंपाउंड स्ट्रक्चर चेंजेस विद द चेंज इन सॉल्वेंट, लाइक क्लोरल हाइड्रेट shows an absorption maxima at 290 in mu in hexane, while the absorption disappears in the aqueous solution. Clearly, the compound contains a carbonyl group in hexane solution and its structure का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, वेयर इन एक्वेस सोल्यूशन इट इज़ प्रेजेंट एज. ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया गया है कैसे प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इक्वेटोरियल एंड द एक्सियल कन्फॉर्मेशन. देन इसमें एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, n pi star R band that appears at a longer wavelength in the alpha beta unsaturated ketones is influenced by the presence of polar group in the y position. The effect of an axial substituent to
to displace the R band to longer wavelength is greater as compared to that observed in the equatorial isomer. The last application in this is the determination of the strength of hydrogen bonding. Like इसमें हम देखेंगे solvents like water हो गया, then इथेनॉल हो गया, ये जो है फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द n इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन. ड्यू टू दिस the energy of n electrons in the ground state is lower depending on the strength of hydrogen bonds. Thus, n-pi transition of carbonyl compound is shifted towards shorter wavelength. Hence, by measuring the lambda max of a carbonyl compound in a non-polar and polar protic solvent, the strength of hydrogen bond can be determined. ये जनरली हमें डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए यूज़ करते हैं. ये सारे एप्लीकेशंस थे जो हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं. This is all about the choice of solvent and solvent effect and the application of UV visible spectroscopy. Thank you.